Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following statement is wrong. यहाँ पर हमें जो statement दिए गए हैं हमें देखेंगे कौन सा statement यहाँ पर wrong दिया गया है. तो one by one हम discuss करते हैं all the statements. जैसे कि हमें statements में दिया गया है about ammonia and phosphine. तो हमारा जो key concept होगा हम यहाँ पर compare करेंगे between ammonia and phosphine. The key concept will be comparison between ammonia NH3 and phosphine PH3. Statement A में हमें दिया गया है ammonia is more poisonous than phosphine. NH3 is more poisonous than PH3. But हम देखेंगे जो phosphine होता है phosphine PH3 is extremely toxic. Is an extremely toxic means poisonous, toxic gas. और उसका जो odor होता है smell होता है it is garlic odor and garlic like odor. That means अगर हम compare करेंगे between ammonia and phosphine, the phosphine is extremely toxic means extremely poisonous. तो यहाँ पर हमें देखें ammonia is poisonous. That means this statement is wrong. Coming to second statement. Statement B में हमें दिया गया है कि ammonia is more basic than phosphine. So let's compare between basicity of those ammonia and phosphine. Ammonia का जो central atom होता है that is nitrogen और nitrogen का size is small. Size of nitrogen is small in the case of ammonia. और यहाँ पर small size होने की वजह से nitrogen का the electron charge density is high. Electron charge density is high. अगर electron charge density high होगा तो electron will be easily available. Electron available easily. और electron अगर easily available होता है that will be more basic. Hence it will be more basic. वो donate कर सकता है electron easily. Coming to phosphine. Phosphine का जो central atom होगा that will be phosphorus और size of phosphorus is large. Large size होने की वजह से उसमें क्या होता है जो electron cloud होते हैं electron cloud distributed in large area. लार्ज एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फाइन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इजीली इन द केस ऑफ द अमोनिया सेंट्रल एटम नाइट्रोजन तो वो क्या होता है मोर बेसिक. तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट स्टेटमेंट. In the case of statement C में दिया गया है ammonia is more stable than phosphine PH3. तो हमने क्या देखा in the case of phosphine the large size of phosphorus in phosphine the electronegativity decreases. Negativity decreases. Due to decrease of the electronegativity क्या होता है जो force of repulsion in bond pairs
force of repulsion between bond pairs will be decreases. Hence जो pH bond क्या होता है, weak हो जाता है. pH bond becomes weaker. अगर pH bond is weaker, that means the compound pH3 will be less stable. So if we compare between ammonia and pH3, pH3 is less stable, means ammonia over here will be more stable due to small size of the nitrogen. तो स्टेटमेंट सी हमारा करेक्ट हुआ. स्टेटमेंट डी में हमें दिया गया है NH3 is more soluble than pH3 phosphine. In the case of ammonia में क्या होता है, intermolecular hydrogen bonding is present. Intermolecular hydrogen bonding और हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन होने की वजह से it will be more soluble in water. Hence, between ammonia and pH3, the ammonia will be more soluble due to presence of intermolecular hydrogen bonding. So statement D is also correct. Among all the given statements, the wrong statement हमारा हुआ, that is statement A कि ammonia more poisonous हुआ है, but हमने यहाँ पर देखा phosphine is more poisonous. The correct option will be option A. I hope you have understood it well. All the best.